इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर अगर आज आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि आपका पैसा ग्रो करेगा और अगले ही हफ्ते आप उन शेयर्स को बेच रहे हैं, देन यू आर नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट, यू आर ओनली बुकिंग योर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड वो म्यूचुअल फंड्स आपको 35% रिटर्न्स भी दे रहा है, then great, you are doing investments, but that is just one small piece of financial planning. तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है and what are the various aspects of personal finance, because personal finance is much bigger than just doing regular investments. Hey guys, my name is Nipun Bhatia और इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आज फाइनेंशियल प्लानिंग को हम डीप में समझेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं एंड हाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हाउ यू कैन अचीव दैट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही पुरानी टेक्निक है विच इज 5W1H और हम उसको 5 wives 1 husband के नाम से भी जानते हैं। Where if you want to understand any concept, you have to answer 5 questions, which is what, where, when, why, who, and finally how. तो आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को भी इन्हीं 6 एस्पेक्ट्स में तोड़ेंगे और समझेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट, व्हेन शुड वन स्टार्ट देयर फाइनेंशियल प्लानिंग, who can do your financial planning, from where you can start your financial planning, and finally how to make your financial plan. What is financial planning में? आप सबसे पहले ये समझो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एनीथिंग रिलेटेड टू मनी एंड व्हाट डू यू डू विद योर मनी। यू अर्न योर मनी, यू सेव योर मनी, यू इन्वेस्ट योर मनी। हम पैसे को बोरो करते हैं, खर्च करते हैं। हम पैसों को खर्च कैसे कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बजटिंग कहते हैं। हम जब लोन लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को डेट मैनेजमेंट कहते हैं। हम जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम देते हैं। पैसों को लेकर आप क्या प्लानिंग करते हैं, दैट इज व्हाट अ फाइनेंशियल प्लान इज। और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं हम अभी आने वाले सवालों में ये भी समझ लेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द बेसिक आंसर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज जो चीज 100 रुपए की है वो कल 110 रुपए की हो जाएगी। आज जो चीज 1 करोड़ की है वो कल 1 करोड़ 30 लाख की हो जाएगी एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टलियर विद टाइम। तो आज अगर आप किसी भी चीज के लिए कुछ प्लान करते हैं कि कल को मैं एक कार लूंगा और वो कार आज के टाइम पे 6 लाख रुपए की है, तो वो कार का कल को वैल्यू 6 लाख नहीं रहेगा, वो कार का वैल्यू कल को 8 लाख हो जाएगा। तो आपको 8 लाख के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी और आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन के रेट या उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की है और कल को वो चीज 110 रुपए की हो रही है, तो आपका भी जो 100 रुपया है वो कल को 111 बनना चाहिए, तभी आप कल को सर्वाइव कर पाएंगे, वरना दैट सर्वाइवल मोड विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। सो द सिंपल आंसर इज इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी एंड दैट इज व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। The third question is, when should one start their financial planning? Answer is as soon as possible. Look at this graph. हमने 5,000 rupees की एक SIP शुरू की, which is giving us a returns of 12% over the long term. So this is an assumption. And when you start investing that money, it will take around 13 to 14 years of time to accumulate first 25 lakh rupees from that 5,000 rupees of investment. Now you continue with that 5,000 rupees of SIP and the next 25 lakh rupees will be accumulated in only 5 to 6 years of time frame. And the next 25 lakh rupees, which is the money that you will accumulate after 50 lakhs, that is going to be accumulated within 3 years of time span. तो आप देख रहे हैं that पैसा हमने हर साल उतना ही इन्वेस्ट किया, बट जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे थे उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। And finally, that money is accumulating and growing with time, but you need to give time to that money. तो जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे उतना ज्यादा आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम दे पाएंगे and that is why it is very important to start your financial planning from the day you start earning. पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। The fourth question, who can be your financial planner or advisor? So guys, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं व्हेन यू आर 22 और 23 इयर्स ऑफ एज, और उस टाइम पे यू डोंट हैव अ बिग कॉर्पस, आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ का अमाउंट नहीं है एंड दैट इज वेयर यू कैन बी योर ओन फाइनेंशियल प्लानर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 to 10 years of your career.
इट इज वेरी मच पॉसिबल टू बी योर ओन फाइनेंशियल प्लानर। और आज के टाइम पे अपने पैसों को लेकर आपके पास जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मुझे अपना पैसा कैसे खर्च करना है, मुझे अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। Definitely, there is a lot of helpful material that is available, but I don't think you need a financial planner or advisor for the first 7 to 10 years of your time. Why I am saying 7 to 10 years? Because 7 से 10 साल के अंदर आप अपना इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे that it becomes even more important for you to choose the right instruments to invest that money. And that is where you can ask some experts. लेकिन इनिशियल पार्ट में you can be your own financial advisor and there are tons of apps where you can go. That is where we come to our next question. So where you can start your financial planning? And the simple answer is go to any app. So I'm not promoting any, but there is Grow, Paytm Money, Zerodha, Covera, Sharekhan, NJ Wealth. There are so many apps that are available in today's time. You can download and you can start investing in any mutual fund, whatever you feel like. All the paperwork is done digitally in today's time and you can start investing tomorrow onwards by just downloading the right app which is suitable for you. And that comes to our last question कि हमने importance of financial planning तो समझ लिया, but what about the how part of it? How will the financial planning be achieved? And that is where we have divided that concept into 6 parts. The first part is budgeting. जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, you first need to understand that how much income you are earning, where you are spending that money, और आपके एक्चुअली में खर्चे कितने हैं. So that expense tracking is nothing but called budgeting. And budgeting is the first step towards your financial planning. Now, when you have done your budgeting, you will get to know that okay, आपका bare minimum amount कितना है survival के लिए, and you multiply that amount by 6 or 9 or 12 based on in which sector you are working. और उसका एक emergency fund आप इकट्ठा कर लीजिए. So if I am willing to spend 40,000 rupees a month, I should have in my bank account at least 3 lakh rupees so that if anything happens tomorrow, I have at least 6 months or 8 months of time to survive on my own. And that is what is called emergency fund. और इसको budgeting में cover कर लेते हैं. The second part is income tax. Income tax को समझना बहुत जरूरी है. Which tax regime is right for you, whether it is an old tax regime or a new tax regime, because आप अपने इनकम टैक्स को अगर ऑप्टिमाइज कर लेंगे, द मोर इन हैंड सैलरी यू विल गेट, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर बजटिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट योर इनकम टैक्सेस एज वेल. So you need to do your calculations, you need to understand how tax regimes work, and finally you need to choose the right tax regime for you, and that becomes the second step of financial planning. The third step is insurance. So before investing, which is what we call is that we are saving something for our certain times. Like I want to travel the world or I want this corpus to be accumulated for my kid. तो वो एक certainty है that you know that it will be coming in your life. But there is an uncertainty also in your life और उसके लिए होती हैं insurances. So the third step of financial planning is insurance. जहाँ पे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर पहले लीजिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लीजिए, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लीजिए, अपनी फैमिली को सेव करिए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज मिनिमाइजिंग योर रिस्क. आप सबसे पहले अपना रिस्क मिनिमाइज करो, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचो, एंड दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. यू आर सेफगार्डिंग योरसेल्फ फॉर द अनसर्टेन टाइम्स. द फोर्थ पार्ट इज डेट मैनेजमेंट. अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने लोन्स को खत्म करिए. आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर टेकिंग पर्सनल लोन्स एट 12% और 13%. सो गेट रिड ऑफ योर पर्सनल लोन्स, गेट रिड ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लोन्स एट फर्स्ट, because this is something which is eating out a lot of your money, and you first need to take care of your debts before actually starting to invest. The fifth part that comes after budgeting, income tax, insurances, debt management is investment. Investment is the fifth part in your financial planning. You can either do a goal-based investment planning or you can invest randomly for your future. और goal-based investment planning में आपके घूमने का गोल, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल, आपके बच्चों की एजुकेशन का गोल, आपके बच्चों की मैरिज का गोल, आपकी खुद की मैरिज का गोल, ये सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ जाएगा. एंड फाइनली द लास्ट पार्ट इज एस्टेट प्लानिंग, वेयर लेट्स से you have a lot of corpus that is accumulated and now you want to do your will planning or how you need to distribute your money if something happens to you. That is the last part of your financial planning and that is a very mature stage of financial planning. तो उससे पहले you keep doing investments. You make sure you are not falling into a debt trap. You keep yourself safe by having good amount of insurances. You make sure that you are managing your money. If you have any doubts
or you want to deep dive into any of the areas and you want to have one-to-one calls with me, my link is in the description box. You can always connect with me by clicking on the below link, and I am more than happy to help you. So I hope आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा. This is the foolproof financial plan, and I have found very less videos which are explaining you of how a complete financial plan can be built. If you have liked this video, please comment, share, and subscribe to my channel. I'll make sure that I'm bringing a lot more useful content to you in the near times as well. Plan today for a better tomorrow. Thank you.